Greetings, students. How are you? Now, welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. What are we going to do today? We are going to start with a new chapter, The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. Now, here, what does Ghat mean? It means the bank of the river, and how one life comes to an end on this Ghat, okay, according to Hindu mythology. Now, let us move forward with the chapter. Now, children, let us start with the what do we call? Let us start and do the summary of little bit summary of the Ghat of the world, and let us study about the writer. Okay, children. Okay. Amitav Ghosh, he was born on 7 July 1956, is an इंडियन राइटर. तो वो क्या है? एक इंडियन राइटर है. ही वन द 54 जनपथ award in 2018. It is India's highest literary honor. Ghosh's ambition novel uses complex narrative strategies to probe the nature of national and personal identities, particularly of the people of India and South Asia. He had written historical fiction and also written non-fiction works discussing topics such as colonialism and climate change. Okay, so he writes on the topics which are universal. Okay, now summary of the Ghat of the world. I've just given a little summary so that while reading the chapter we get to know what is in it. The Ghat of the Only World is by the author Amitav Ghosh. The Ghat Only World summary deals with the fulfillment of a promise by a friend. तो एक promise है by a friend, and it is fulfilled. It is a tribute to the Kashmiri poet Agha Shahid Ali. Shahid made the author promise to write about him after death overtakes him. Because ये जो शाहिद अली है, children, he has cancer. Furthermore, this was before Shahid suffered from a brain tumor and ultimately succumbed to it. It is a story about friendship and commitment. Moreover, the author fulfills his promise he made to his friend who is no longer alive. The lesson focuses on Shahid, what were his likes and what was his way of living life. This was like a celebration, even his diagnosis, because he was diagnosed with cancer and brain tumor. The Ghat of the Only World discusses Shahid's love for Kashmir. It also talks about his interest in music, food, literature, and art. The author also discusses his views on life. Okay, children. Now I'll just show you the picture of Amitav Ghosh and his friend Agha Shahid Ali. Okay. Now this is, children, this is the what do you call it? This is the writer. Okay, who is it? He is Amitav Ghosh, who has written this story, right? He has written about his friend Shahid. Okay, now why this, children? He has written this story. This is the story of friendship and commitment, and how Shahid Ali dies, and how he requests him to write about him. Okay, so he is Amitav Ghosh. Okay, now let us see who is Shahid Ali. Now this is his friend Shahid Ali. Okay, Shahid Ali, this is his friend Mr. Shahid Ali, right? So he writes the story about him. Now let us continue with the chapter, children. Now let us start the chapter. The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. A dying man, an expatriate from Kashmir. What is expatriate means? A person who lives outside their own country. Okay, so he's an expatriate from the Kashmir.
ask the author to write something about him after he is gone. After he is gone means after he dies. ठीक है, जब वो मर जाता है तो वो अपने फ्रेंड अमिताभ घोष को बोलता है कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ लिखना. The following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. Now this is a promise, okay, that Amitav Ghosh wrote. Okay, about whom? About Agha Shahid Ali. And now I showed you the photographs also. The first time that Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on April 25, 2001. तो क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टाइम अग्गा शाहिद अली स्पोक टू मी यहाँ पर किसको बोला गया है? अमिताभ को. किसको बोला गया है? अमिताभ को. ठीक है. अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25th April 2001. The conversation began routinely. Routinely means ठीक ठाक से, जैसे हम रोजाना बातें करते हैं. ठीक है. और I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. अब क्या वो बोलता है कि एक रूटीनली कॉल थी, जैसे एक फ्रेंड किसी फ्रेंड को करता है. फिर वो बोलता है आई कौन है यहाँ पर? अमिताभ घोष है. तो ही इज़ लाइक आई मेड अ कॉल. ठीक है, मैंने उसको कॉल किया और उसको ये रिमाइंड किया कि वे वी आर इन्वाइटेड फॉर अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. और वो बोलता है कि मैं उसके घर आऊँगा क्या करने? उसको पिकअप करने के लिए आऊँगी. अपार्टमेंट आर फ्लैट, ओके, जहाँ जहाँ शाहिद रहता था. ओके. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid. ठीक है. Although he had been under his treatment for cancer for 14 months. तो जो शाहिद अली था वो कितने महीनों के लिए था अंडर द कैंसर ट्रीटमेंट? फॉर 14 मंथ्स. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ शाहिद वॉज फिट एंड कुड थिंक क्लियरली. ठीक है, क्योंकि कई बार मेमोरी उसके ब्रेन में था तो मेमोरी लॉस हो जाती है. एंड परफेक्ट लूसिड. ठीक है, लूसिड मीन्स अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. ही इज़ कि हालांकि जो कैंसर का ट्रीटमेंट था वो 14 मंथ से चल रहा था, बट शायद वो स्टिल ऑन हिज फीट. ही वॉज ओके. ओके. एंड परफेक्टली लूसिड मतलब वो चीज़ों को समझ सकता है, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी. और फिर वो बोलता है एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस मतलब कभी कभी वो कुछ चीज़ों को भूल जाता था. ठीक है. ही यूज टू लूज हिज मेमोरी कभी कभी. आई हर्ड हिम थम्पिंग. थम्पिंग मतलब नीचे कोई बुक रखते हैं. ठीक है. थम्पिंग. आई हर्ड हिम थम्पिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड. और एंगेजमेंट बुक क्या होती है चिल्ड्रन? एंगेजमेंट बुक मीन्स जिसमें हम शेड्यूल लिखते हैं अपने. ठीक है. तो फ़ोन पे क्या सुनाई दिया कि शाहिद अली ने एक बुक को थंप करा मतलब नीचे रखा. ठीक है. एंड देन सडनली ही सेड, ओ डियर, आई कांट सी एनीथिंग. आई कांट सी अ थिंग. देयर वाज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग. ठीक है. तो वंस वाइल ठीक है, ही सडनली सेड दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग. और वो अपनी शेड्यूल बुक को मतलब देखता रहता है और फिर उसको बोलता है, ओह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ. राइट. वी कैन नॉट सी एनीथिंग. राइट. एंड देन ही सेज, आई होप दैट आई एम नॉट डाइंग. ठीक है. फिर वो बोलता है कि आई होप आई एम नॉट डाइंग. Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him टच ऑन द सब्जेक्ट. वो बोलते हैं कि शाहिद और मैं ना बहुत टाइम से बात कर रहे थे. ठीक है. फॉर अ लॉन्ग ड्यूरिंग लास्ट वीक, बट उसने कभी अपनी बीमारी के बारे में या मरने के बारे में पहले इससे कभी नहीं बोला था. I have never before heard him touch on the subject means I've never heard him talking about his cancer. ठीक है, या डेथ के बारे में. I don't know how to respond.
वो बोलता है I do not know how to respond. His voice was completely at odds. ठीक है, at odds, right? तो his voice was completely at odds means in conflict or at variance. ठीक है, with the content, with the content of what he had just said, light to the point of jocularity. तब वो क्या बोलता है, वो सिंपल ये बोलता है कि आई डू नॉट नो हाउ टू रिप्लाई, मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं कि जब उसने ये बोला कि मैं मरने वाला हूँ, ही हैड नॉट सेड इट सीरियसली दो ही वॉज जस्ट टेकिंग अस अबाउट अ सीरियस एस्पेक्ट। ठीक है, तो वो बहुत जोकैलरिटी में बोलता है। ठीक है, आई डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, जो उसने पहले बोलता कि आई एम गोइंग टू डाई, तो जो अमिताभ घोष है वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूं। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स मीन्स एट कॉन्फ्लिक्ट, राइट, टोटली ऑपोजिट विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड, लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोकुलैरिटी मीन्स ह्यूमर। आई मम्बल्ड मतलब हल्के हल्के से समथिंग मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू हियर, मतलब अपने बोलना। ठीक है, समथिंग इनोकेशियस मीन्स नॉट हार्मफुल। ठीक है, सो आई मम्बल समथिंग इनोकेशियस, सो आई डिड नॉट नो हाउ टू गिव अ रिप्लाई, सो ही हैड नॉट सेड इट सीरियसली। ठीक है, इनोसेंटली आई टोल्ड हिम इन लो वॉइस दैट ही विल सर्टनली नॉट डाई, एवरीथिंग विल बी ओके। तो नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन। ठीक है, ही कट मी शॉर्ट, उसने बोला बहुत मम्बल वे से या बहुत मतलब दुखी मन से और मम्बलिंग, उसने बोला नहीं नहीं शायद तुम क्या होगे, तुम बिल्कुल ओके रहोगे। ही कट मी शॉर्ट मीन्स ही स्टार्टेड स्पीकिंग बिफोर आई हैड स्टॉप स्पीकिंग, मतलब मेरी बात को काट के, है ना, in a tone of voice that was at once quizzical and direct. He said, whenever it happens, I hope you'll write something about me. Quizzical, puzzling. So he started speaking before I had stopped speaking. His voice was full of puzzle. He had left some problem. So he directly asked me to write something about him after his death. उसने बोला कि उसकी बात काटते हुए बड़े पजल्ड होके उसने बोला कि तुम क्या मेरे बारे में लिखोगे जब मैं क्या हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, उसके बाद क्या तुम मेरे बारे में लिखोगे, राइट। आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. बोलते I was shocked, मैं बहुत ज़्यादा shocked हो गया था और मैं बहुत टाइम तक क्या रहा, पॉज रहा हूँ, बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग, और मैं थोड़ी देर पॉज होने के बाद क्या करा, फिर से मैंने बोला दैट पीपल से ऑन सच ओकेजन, जो लोग भी इस ओकेजन्स में बोलते ही होंगे। ठीक है, शाहिद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और फिर वो अपने दोस्त को बोलता है शाहिद यू हैव टू बी फाइन, यू विल बी स्ट्रॉन्ग। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड, तो जहाँ पर वो स्टडी करता था, जो उसकी स्टडी रूम था चिल्ड्रन, तो वहाँ से उसकी बिल्डिंग दिखती थी। दैट मीन्स अब वो क्या थे, सेम क्या बोलते हैं, सेम एरिया में रहते थे, राइट। तो ही कुड सी सम 8 blocks अवे, और वो कितने ब्लॉक्स अवे रहता था, 8 blocks। ही वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, इट वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स दैट, मतलब कुछ महीनों पहले ही वो क्या हुआ, यहाँ आया था। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मनहट्टन, राइट, तो ही हैड बीन पहले लिविंग इन मनहट्टन when he had a sudden blackout in February 2000, अब उसको थोड़ा सा blackout हो गया, blackout means unconscious हो जाना, in 2000। तो क्या करा उसने कि वो अब यहाँ पर उनके पास रहने लग गए। आफ्टर टेस्ट रिवील दैट ही हैड अ malignant brain tumor। what is malignant tumor? दैट इज़ अनकंट्रोलेबल, जो फैलता रहता है। तो ही हैड मेलिगन ब्रेन ट्यूमर। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समिता, हु टीचेस एट द प्रैट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो वो क्या करता है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है
और फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन भी थी समिता, और वो क्या थी, एक टीचर थी, और कहाँ पढ़ाती थी, प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम वेयर आई लिव, मीन्स वेयर अमिताभ घोष लिव्ड। फिर शायद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस मतलब ही कंफर्टिंग या सोलेस, ठीक है। रीअश्योरेंस मतलब जब हम बोलते हैं ना तुम ठीक हो जाएगा, तो शायद ने उसको इग्नोर किया। ही बिगैन टू लाफ एंड इट वॉज देन आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड डेड सीरियस। अब फिर जब वो ज़ोर से हंसा तो तब क्या हुआ, तब राइटर को समझ में आता है कि ही वॉज डेड सीरियस अबाउट इट। I understood that he was entrusting, giving responsibility, ठीक है, entrusting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. तो वो क्या बोलता है कि आई अंडरस्टूड दैट, वो क्या दे रहा था उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट मी टू रिमेंबर हिम थ्रू डायलॉग्स बिटवीन फ्रेंड्स और इन एनी मेमोरी। तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसके मेमोरीज़ में, या जैसे हम फ्रेंड्स में बोलते ना, अरे वो कितना अच्छा इंसान था, ऐसे वो नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड मी टू राइट अबाउट हिम सो दैट पीपल रिमेंबर्ड हिम, ठीक है। शाहिद न्यू ऑल too well that for those writers for whom things become really only in the process of writing. Now, Shahid knew all too well that for those writers for whom things become really only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with the loss and bereavement. Inbuilt means internal, resistance means opposition, and bereavement means sorrow or sadness. Now, Shahid knew it very well that some writers want to write only about reality or factual situation. Such writers do not want to write about the loss or sorrow, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ओके। आई न्यू रेजिस्टेंस ऑफ डीलिंग विद लॉस एंड ब्रेवमेंट, ठीक है। सब कुछ राइटर्स क्या करते हैं, सिर्फ फैक्चुअल के बारे में लिखना पसंद करते हैं, राइट। बट कोई कोई राइटर क्या है, दे डू नॉट वांट टू राइट अबाउट सॉरो और लॉस, ओके चिल्ड्रन। Now he knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. वो तो हम एक तो पहले ही बहुत दुखी थे कि he is going to die, ठीक है। और फिर मैं कैसे बोल सकता था कि अच्छा कोई बात नहीं, मरने के बाद what will we will write about you। तो वो क्या कर रहा था, ही आई वुड हैव टोल्ड माई, ठीक है। तो उसको पूरा पता था कि क्या करेगा, ये रीजंस देगा, ठीक है। I would have told myself that I was not a poet. So I would have told myself that I was not a poet. That our friendship was of recent date. वो तो या तो कुछ उसको पता था कि ये reasons देगा, क्या reason देगा, कि वो एक poet नहीं है, या उसकी फ्रेंडशिप बहुत बहुत पुरानी नहीं है, ये तो नई नई फ्रेंडशिप थी उनके बीच। दैट देयर वर मैनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर, और कई बार बहुत अलग अलग लोग उसको बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है। जितना अमिताभ घोष नहीं जानता था, उससे ज़्यादा उसको जानते थे, ठीक है। नाउ that there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge, और वो लोग जो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं वो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अंडरस्टैंड, बहुत नॉलेज से लिखेंगे। all this Shahid All this Shahid had guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time. तो उसको पता था, शाहिद को पता था क्या होगा, ये ना इन चीज़ों को नहीं मानेगा, ठीक है। बट उसने Shahid had thought that all such probably excuses. He had decided not to accept any excuses I could think of still this time, ठीक है। You must write about me, तो उसने फिर से बोला, ठीक है। So he again told me that I must write about him, ठीक है। Clearly though it was that this imperative means order, would have to be acknowledged. Acknowledge means accepted. I could think of nothing to say, ठीक है। He could not think anything to say.
What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? Finally I said, Shahid, I'll do the best I can. तो वो बोलता है, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई कुड नॉट find words to promise him that I would write about him after his death. Finally, I told him that I would make my best effort. तब उसने promise किया कि मैं क्या करूँगा, best effort करूँगा इस तेरे बारे में लिखने के लिए. By the end of conversation, I knew exactly what I had to do. तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आई मतलब जो अमिताभ घोष हैं उनको पता था वो क्या करना चाहते हैं. ठीक है. आई पिक्ड अप माई पेन, वो उसने पिक करा, नोटेड द डेट, इस डेट को करा 25 अप्रैल 2001 को राइट करा. दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और कुछ मंथ्स तक उन्होंने सेम करने की कोशिश करी. राइट. and wrote down everything I remembered of the conversation. और जो भी उनके बीच बातचीत होती थी वो सारा लिखता था. This I continued to do for next few months, और उन्होंने यही कोशिश करी पूरे next months के लिए. It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. और बोलते हैं ड्यू टू दिस रिकॉर्ड कि जो वो लिखते थे, जॉट डाउन करते थे अपनी डायरी में. ठीक है. इसीलिए सक्सेसफुल है. ठीक है. I knew Shahid's work long before I met him. His 1997 collection, The Country Without a Post Office, had made a powerful impression on me. अब पता चलता है कि जो शाहिद हैं वो भी राइटर हैं. तो हिज कलेक्शन, जो कि उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, द कंट्री विदाउट अ postman, had made a powerful impression on me. His voice was like none I had ever heard before, at once lyrical and fiercely disciplined. इसका मतलब चिल्ड्रन ये नहीं कि वो कुछ गा रहे हैं. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1997. तो इस बुक की वो बात कर रहे हैं कि आई नेवर हर्ड अ वॉइस सिमिलर टू दिस. Sometimes his voice was poetic and greatly disciplined. On some occasion his voice was impressive and he appeared to be talking with the innermost feeling. ठीक है. Not for him the mock casual almost prose of such contemporary poetry. अब वो बोल रहा है कि his voice did not look artificial, normally similar to somebody reading a poem in the style of a reading a prose. की एक ही तरह की नहीं थी उसकी voice. His was a voice that was not ashamed to speak of bardiac register. Bardiac register means a poet style होता है. तो he was not ashamed to recite poem in a bardiac register style. ठीक है. bardiac register एक type of poetic style होता है. I knew of no one else who would ever conceive of publishing a line like mad heart be brave. तो वो क्या बोल रहा है, I could not even think of someone who could write mad heart and brave. Shahid was the only person who could speak and write in such a fashion. ठीक है. और शाहिद ही ऐसे कुछ चीज़ें लिख सकता था. In 1998, I quoted a line from The Country Without a Postman in an article that touched briefly on Kashmir. तो ये जो the country without a postman means it talked about Kashmir. At that time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar. So he was from the capital, Kashmir's capital, Srinagar, and had studied in Delhi. तो कहाँ पढ़ते थे वो? दिल्ली में. I had been at Delhi University myself. और वो पोएट बोल रहा है कि he had been in Delhi University himself. But although our time there had briefly overlapped. इसका मतलब ये है children, इसका मतलब ये that he too studied in Delhi, but for a short time we both मतलब Shahid and Amitabh were simultaneously in Delhi, but वो they never met each other. वो कभी एक दूसरे को नहीं मिले. Some of our friends were common to us. One such friend introduced me to Shahid. तो वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था. We had never met. We had friends in common, however, and one of them put me in touch with Shahid. तो वो बोल रहा है
कि हमारे बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स थे, बट हम उस समय जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो हम क्या करते थे, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, ठीक है। इन 1998 and 1999 we had several conversation on the phone and even met a couple of times. So between these 2 years, 1998 and 1999, children, they had conversation over the phone and even met a couple of times, और वो कुछ समय के लिए मिले भी थे. But we were no more than acquaintance until he moved to Brooklyn the next year. बोले कि हम क्या थे, सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं ना, ऐसे थे, बट हमारा क्लोज कनेक्शन तब बना जब वो कहाँ पर आया, ब्रुकलिन में आया. Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. तो फिर वो पहले पहले कैसे मिला करते थे, जब वो ब्रुकलिन में आए तो फिर उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, लंच पे बुलाया, डिनर पे बुलाया, और जब उनकी बातचीत होने लगी चिल्ड्रन, तो फिर उनको ये पता चला कि उनके अंदर क्या कॉमन है, कि देवर मोस्ट प्रॉबली देवर अलाइक. By this time, of course, Shahid's condition was already serious, yet his illness did not impede the progress of their friendship. Impede means hinder or prevent. ठीक है, तो बाय दिस टाइम, जब वो बोलते कि जब वो यहाँ पर था उस समय तक क्या हुआ, हम मिलना शुरू कर देते, बट वो जो उसकी बीमारी थी हमारे दोस्ती के बीच नहीं आई. We found that we had a huge roster of common friends in India, America, and elsewhere, and we discovered a shared love of Rogan Josh, Roshandra Begum, and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket, and an equal attachment to old Bombay films. तो वो क्या बोलते हैं, we found that we had several common friends living in America, India, and at other place. He found that they both liked to eat Rogan Josh. ठीक है, it's a dish. So they both liked to eat Rogan Josh. They liked to listen to songs like Roshana Begum and Kishore Kumar, and they did not like cricket. And they both liked Hindi movies. Because of Shahid's condition, even the most trivial exchange had a special charge. ठीक है, trivial means very small. Exchange had a special charge and urgency, means condition of Shahid was very very serious, so even the smallest discussion was important and urgent, क्योंकि उसको लिखना था, है ना, उसको बोला गया था ना कि मेरे बारे में लिखो. The inescapable poignance of talking. Inescapable means unavoidable. Poignance means sorrow of talking about food and half forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying. और फिर वो क्या बोलता है कि food and people who were most forgot, discussion over food and people and were almost forgotten should have been avoided because he was dying. वो बोलता है कि हमारे डिस्कशंस इनके ऊपर होते थे, बट क्या हुआ कि वो कभी इन चीज़ों को छोड़ते नहीं था कि वो मर रहा है, ठीक है. ही लिव्ड हिज ईच डे इन फुल स्पिरिट. दिस sorrow of pain increased a lot because Shahid was a poet, ठीक है, and figures from the past with the man who knew himself he was dying was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who has achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever known as a friend. Now he is saying that this sorrow of pain increased a lot because Shahid was a poet. He had achieved a greatness that only I could realize as a friend. Shahid was probably not talking to anybody else, ठीक है, क्योंकि वो अब हर ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते थे. ओके चिल्ड्रन, thank you children, thank you very much. We will be continuing in the next part. Okay children, please like, share and comment.